focus to the national capital. Ahead of New Year, the pollution level has peaked in the national capital, with Delhi's AQI edging dangerously close to severe category. Delhi government has decided to make two measures under GRAP stage 4 permanent. Under these new measures, fuel will not be provided to vehicles without a valid pollution certificate, and entry of vehicles below BS6 has also not allowed in Delhi. Authorities say the curbs are aimed at preventing further deterioration of air quality as pollution levels remain alarmingly high. As of 6 a.m. today, December 28, Delhi's overall AQI stood at 391 in the very poor category. Several hotspots across the national capital breached severe category, with Anand Vihar at 445, Wazirpur at 433 and ITO above 400. Poor air quality also persists across the NCR, while Delhi Airport has issued a passenger advisory urging travellers to check real-time winter travel updates amid low visibility. So, two curbs under GRAP 4 have been mandated by the Delhi government amid the rising pollution levels in the national capital. First of which is that no fuel will be given to vehicles not having a valid pollution certificate, and the second one is that any vehicle that is non-compliant, BS6 non-compliant, will not be allowed entry in the national capital. Now, this raises 7 big questions that the Delhi is now asking after these two curbs that have been mandated by the government. The first one is, who will check the pollution control certificate at the petrol pumps? So, is there enough mechanism that is in place at these petrol pumps to check the pollution control certificates? Now, will fuel denial spark chaos at fuel stations? Now, this does not go down well with all the residents, and which might spark chaos at the fuel stations if they are denied fuel. Will fuel pump staff be vulnerable to mobs? Now, this is exactly what we were mentioning, that there are some fringe elements as well which who might object to the denial of fuel or not having a valid pollution certificate. Will non-BS6 bans jam the Delhi borders? Now, this is also a big question. What is the mechanism that will be in place at the borders to check the non-BS6 compliant vehicles, and will this lead to long traffic jams on the Delhi borders? Has government offered adequate public transport is also the question that the residents are now asking. You have banned vehicles that are non-BS6 compliant, but what about the alternatives? Are there alternatives like adequate public transport for the residents to commute from regions like Gurgaon, Noida, Faridabad to the national capital? Who will be compensating those hit by the bans? So, will the government compensate? Because these curbs also lead to some economical challenges that the Aam Aadmi is likely to face, because it's not easy for everyone to suddenly switch from BS3 or BS4 vehicles to BS6 vehicles that will be complying in the national capital. Are vehicle curbs enough to fight smog is the biggest question that the residents are asking. Of course, vehicular pollution is the biggest factor that leads to the pollution crisis in the national capital, but it's not the only factor behind the crisis. There are other factors also, like industrial emissions, stubble burning, and construction, road dust. These are also some of the factors that need to be looked at. And my colleague Sushant Mehra is now joining us with more details on this. सुशांत, ये जो दो कर्ब्स है जिन्हें मैंडेट किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, इनका सही तरीके से पालन हो, उसके लिए क्या एक्शन लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? क्या पेट्रोल पंप्स पे कोई अलग से डिप्लॉय होगा ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स चेक करने के लिए? क्या कोई कैमरास लगेंगे? और जो BS6 का जो रूल है, उससे क्या ट्रैफिक जैम्स की एक्सपेक्टेड है बॉर्डर्स पे? क्या उससे काफी कंफ्यूजन हो सकता है बॉर्डर्स पे? देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं कि एनफोर्समेंट टीम्स को जो है वो डिप्लॉय किया गया है दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंप्स पर और मॉनिटरिंग करने के लिए। इसके अलावा ANPR कैमरास जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं तमाम पेट्रोल पंप्स पर। अगर आप गाड़ी लेकर के जाते हैं और आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पेट्रोल जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। जाते के साथ ही ANPR कैमरास आपकी गाड़ी को ट्रैक करेंगे।
देन उसके बाद अगर आपकी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल जो है वो नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से पीयूसी सर्टिफिकेट को जो है वो करने की कोशिश की गई है, मैंडेटरी जो है वो करने की कोशिश की गई है। सरकार का मानना है कि लोग पीयूसी जो है वो नहीं कराते। पिछले जब से ग्रैप 4 इम्पोज हुआ है दिल्ली के अंदर, उसके बाद से ही लगातार जो पीयूसी सर्टिफिकेट से अगर नहीं है तो 10,000 रुपए का चालान जिस तरीके से सरकार ने इम्पोज किया था, उस पर सख्ती जो है वो देखने को मिली और लोगों ने लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट जो है वो बनवाए। इसके अलावा BS6 से नीचे की जितने भी व्हीकल्स हैं उनको फिलहाल रोक जो है वो लगाई गई थी ग्रैप 4 के जरिए, लेकिन अब ग्रैप 3 जो है वो इम्पोज है। ग्रैप 4 की पाबंदियां जो है वो हटाई गई हैं। ऐसे में अब जो BS6 से नीचे के व्हीकल्स हैं वो फिलहाल अभी दिल्ली में आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई सारी पाबंदियां जो है वो अभी भी बरकरार हैं। दिल्ली में क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 6 तक के स्कूल जो है वो अभी हाइब्रिड मोड पे जो है वो चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन पर काफ़ी हद तक अगर कहा जाए तो सख्ती जो है वो नज़र आ रही है। कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, BS3 जो CAQM की गाइडलाइंस है ग्रैप 3 के अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको नियमों का पालन जो है वो करना पड़ेगा। कर्टन जो है वो लगाने पड़ेंगे अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या डेमोलेशन कर रहे हैं। इसके अलावा वाटर स्प्रिंकलिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोर जो है वो दे रही है सरकार, ताकि दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर ना बढ़े। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर आज की अगर बात की जाए तो वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया है। 40 में से 20 मॉनिटरिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर अभी भी पोल्यूशन का स्तर जो है वो अगर कहा जाए तो सीवियर कैटेगरी के अंदर है। ITO पर मेरी मौजूदगी है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो किस तरीके से आप तस्वीरें देखेंगे, चारों ओर आपको स्मोक जो है वो जी नजर आएगा। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो किस तरीके से आपको यहाँ पर नजर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा PM 2.5 का जो लेवल है वो किस तरीके से है। लेकिन ओवरऑल दिल्ली में अगर बात की जाए तो PM 2.5 का जो इस वक्त लेवल बना हुआ है वो 391 यानी जी 400 के पास सुशांत। है। और पूरी दिल्ली के अंदर इस वक्त अगर कहा जाए तो बैरपुर कैटेगरी के अंदर जो है इस वक्त दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो बना हुआ है। बिल्कुल सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो द ओवरऑल AQI in the national capital is at 391, which is in the poor category but very near to the severe category that starts from the 400 mark. And amid the rising pollution crisis, two curbs have been mandated by the Delhi government. First, that no fuel to vehicles not having pollution control certificates, and the second, that non-BS6 compliant vehicles will not be allowed to enter the national capital.